Hi everyone, my name is Aishwarya and welcome back to Education. So today we are going to discuss the topic of Directive Principles of State Policy. इस टॉपिक को स्किप करना बहुत बड़ी गलती होगी बिकॉज ये प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. साथ ही साथ ये पॉलिटी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड पॉलिटी इज़ पार्ट ऑफ GS पेपर 2 सिलेबस. स्टार्टिंग with a previous year question, so DPSP से ये सवाल पिछले साल पूछा गया था. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates which of the following? The right to equality, the DPSP, the right to freedom, or the concept of welfare. I'll give you 5 seconds. Think about it and answer in the comment section below. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is DPSP. If you know about Article 39, आप easily इस सवाल का जवाब दे सकते थे. So why not to understand these articles in the easiest way possible? Starting with the introduction. So DPSP का concept जो है वो पहली बार Spanish Constitution में पाया जाता है और वहाँ से वो Irish Constitution में पहुँच जाता है. So स्पेन से ये concept Ireland travel करता है and उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है. दैट इज अंडर पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, दे आर DPSPs आर द आइडियल्स which are meant to be kept in mind by the state while making policies and enact laws. DPSP acts as an instrument of instructions, this is a very important point, which are enumerated in Government of India Act of 1935. Also, DPSP is essential to establish economic and social democracy in the country. All right? Let's look at 3 important features of DPSP. सबसे पहला feature है is the aim of DPSP, and that is to realize the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity. Right? The concept of welfare state is again a very important feature of DPSP. And the final and the most important feature, which you got to note in your minds, DPSP are non-justiciable, which means they are not legally enforceable by the courts of law for their violation. All right, remember this point. And this is a major difference between DPSP and fundamental rights. Now, classification. Let's understand classification of DPSP. So first of all, Indian Constitution has not originally classified DPSPs, but on the basis of their content and direction, 3 classifications पाए गए. पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का एक कैटेगरी या क्लासिफिकेशन, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड थर्ड वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. सो फोकस हियर. ठीक है, मैं आपको ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी कि इजीली आर्टिकल्स कैसे याद रखते हैं. सो आर्टिकल 38 इज टॉकिंग अबाउट प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस. 3 काइंड्स ऑफ जस्टिस: सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ठीक है, प्लस minimizing inequalities. तो you simply have to note down, 1-liner notes बनाने आपको अपने prelims के पहले. अभी 2 महीने बचे हैं तो आप इस समय ऐसे 1-liner notes बनाएंगे. तो आर्टिकल 38 क्या बात कर रहा है? To secure social, economic and political justice, ठीक है, plus minimize inequalities. That's it. आर्टिकल 39 में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बहुत easily याद रहेगा. See, right to adequate means of livelihood for all, ठीक है, equitable distribution of resources of the community, prevention of concentration of wealth. ये आपको पूछा जा चुका है. We started our lesson with this particular question that was asked in last year's prelims. So focus here. Okay, equal pay for equal work to men and women, preservation of health and strength of workers and children against foreseeable abuse, opportunities for healthy development of our children, जो हमारा भविष्य है. Article 39A is talking about promoting equal justice and free legal aid to poor. कभी कभी जस्टिस पाना एक बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है और इसकी वजह से पुअर सफ़र और दे फेस अ लॉट ऑफ इनजस्टिस.
Some more articles under socialistic principles. Article 41. In cases of unemployment, old age, sickness, and disablement, secure citizens right to work, right to education, right to public assistance. Simple. Article 42 में क्या mention है? Make provision for just and humane working conditions and maternity relief. बहुत important point है. Chances है कि ये article आपको पूछा जा सकता है. Article 43, secure a living wage, a decent standard of living, and social cultural opportunities for all workers. Article 43A takes steps to secure the participation of workers in the management of industries. And Article 47, raise the level of nutrition and standard of living of people and to improve public health. Again, this is a very important point. राइट तो इन दो आर्टिकल्स पे ज़्यादा फोकस करेगा. आई फील ये आपको पूछा जा सकता है इस साल. नाउ लेट्स लुक एट what government has done to implement this socialistic principles या the above articles जो हमने पढ़ा है. So ये कुछ important programs हैं जैसे नरेगा है, नालसा है, मिशन पोषण 2.2. सो और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जो इन आर्टिकल्स और इन प्रिंसिपल के बेसिस पे गवर्नमेंट ने फ्रेम किए. नाउ गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस पे कौन से DPSP आर्टिकल्स को बनाया गया है? सी आर्टिकल 40, organize village panchayats and endow them with necessary powers and authority. So if you know 73rd amendment, you will clearly see कि ये जो amendment थे वो इस particular गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाए गए या किए गए. Right or not? Right? Comment down below if you think what I'm saying is right. Article 43, promote cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas. So Article 40 में amendment याद रखो, 73rd 74th easily याद रह जाएगा आपको. Article 43 में है promotion of small scale industries. You can just note it down. Small scale industries की बात हो रही है यहाँ पे. Right? The next article 43B, promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society. So basically it's all about cooperative societies. Article 46, promote the educational and economic interest of SCs, STs and other weaker sections of the society and protect them from social injustice and exploitation. So Article 46 is talking about promotion of educational and economic interest of SCs, STs and weaker sections of the society. That's it. Article 47, prohibit the consumption of intoxicating drinks, drugs which are injurious to health. So Article 47 को easily याद रख सकते हैं. सिनेमा घर में जब हम जाते हैं फिल्म देखने या कोई भी मूवी को अगर हम देखते हैं तो उसके पहले एक डिस्क्लेमर आता है दैट अल्कोहल और स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. उससे आसानी से आर्टिकल 47 याद रह जाएगा. तो जब भी आप फिल्म देखेंगे तो इमीडिएटली आपको बोलना चाहिए, रिसाइट करना चाहिए, ओह दिस इज़ आर्टिकल 47. सी आई एम नॉट ट्राइंग टू बी फनी बट दिस इज़ अ फैक्ट. आपको अपनी पढ़ाई हर जगह अप्लाई करनी पड़ेगी तब और ईजिली आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी. मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? डोंट जस्ट रीड इट और स्टडी लाइक अ लर्नर but implement it in your life. Like Article 47, okay, if there is a topic to do with cottage industries, you can say, oh, Article 43 में इसके बारे में बात की गई है about small scale industries. Are you getting me? So the more you repeat, the more you can retain and recall in your examination, the better you can recall in your exams, right? Now, Article 48, prohibit slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle and to improve their breeds. तो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ आ रहे हैं करंट अफेयर में. सो यू कैन रिलेट दिस आर्टिकल immediately to that particular topic. Article 48 is all about milch animals and to not slaughter them. Instead, work on improving in their health and improve their breeds, right? Let's look at how government has implemented these principles. जो above articles अभी हमने पढ़े वो सरकार ने किस तरह से किन स्कीम्स के तहत अप्लाई किया है. पहला obviously 73rd Amendment Act, that is your Article 40, right? Then Ministry of Cooperation is working on the above basis of the above articles that we studied. Article 21A of the Constitution, CSC, Gramin, Easto, and many other many other yojanas which are based on these principles,
ऑल राइट, सो ये आपको ब्रीफली याद रखना चाहिए. हो सकता है दे कैन आस्क यू, यू नो, दे कैन ट्विस्ट एंड दे कैन आस्क यू कौन से योजना इनमें से या कौन सी जो अमेंडमेंट है वो गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ DPSP पे के बेसिस पे बनाई गई है या अब इम्प्लीमेंट की गई है बाय द गवर्नमेंट, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दैट. नाउ लेट्स लुक एट आर्टिकल्स ऑफ DPSP बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. पहला आर्टिकल है आर्टिकल 44. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है. सी, it talks about securing all citizens a uniform civil code throughout the country. Now, what is the meaning of uniform civil code? Uniform civil code is the ongoing point of debate regarding the Indian Constitution's mandate to replace personal laws based on scriptures and customs of each major religious community in India with a common set of rules governing every citizen. One rule for all, regardless of the customs, regardless of the religion, right, that the community or the people are following or they believe in, regardless of faith. बस एक common rule होगा सबके लिए, right? Now, Article 45, provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 14 years. Again, very important. Article 48, organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. ये भी important है. So जो मैं बोल रही हूँ important है, questions आने के ज़्यादा chances है यहाँ से. Okay? Article 49, protect monument, places, objects of artistic or historic interest which are declared to be of national importance. Very important. Article 50, separate the judiciary from executive in public services of state. And Article 51, promote international peace and security and maintain just and honorable relation between nations. Now let's talk about amendments. ठीक है, DPSP में काफ़ी सारे changes, additions हुए and it started with the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 जिसमें Article 39, 39A, 43A and 48A में changes हुए थे. The next important amendment is that of 44th Constitutional Amendment Act of 1978 जिसमें Article 38 में minimize inequalities का clause add किया गया था. 86th Constitutional Amendment Act of 2002 Article 45 में compulsory elementary education को add किया गया and 97th CAA 2011 Article 43B में cooperative societies की बात हुई. ठीक है, इसको इस clause को add किया गया. So these are important amendments related to DPSPs. Okay, remember them. When I talked about features of DPSP, I made you note down a very important point, and that is that DPSPs are non-justiciable in nature, right? And this is a major difference between FRs and DPSPs. So DPSPs are basically moral obligation of the state. So let us see a timeline कि आज current situation क्या है, ठीक है? And what is the correlation or what is the link between FRs and DPSP? This is very important to understand. So तो कहानी शुरू होती है 1951 में with चंपाकम डोराय राजन केस जहाँ पे लिखा है FR will prevail. Okay, first, fourth, seventh Constitutional Amendment Act to implement some of the DPSPs. गोलकनाथ केस 1967 में Parliament cannot amend FRs to implement DPSP of state. ये verdict दिया गया था 1967 में. Then in 24th and 25th Constitutional Amendment Act, Article 31C को insert किया गया with two important provisions. पहला ये था no law which seek to implement socialistic directive principles specified in Article 30 shall be void on the ground of contravention of fundamental rights conferred by Article 14, 19 or 31. 31 तो repeal हो चुका है, right? I'm talking about 24th and 25th Constitutional Amendment Acts. तो इसका पहला provision ये था. दूसरा provision बहुत important है. Such laws shall remain not to be questioned in any court of law. ये दूसरा provision है. Further, केशवानंदन भारती केस में दूसरा जो clause था 31C का उसको null and void declare किया गया. And then 42nd Constitutional Amendment Act में Parliament expanded the scope of Article 31C. Finally, Minerva Mill case 1980 में
ये verdict आया that harmony and balance between FR's fundamental rights and DPSP is an essential feature of the basic structure of the constitution. So जब भी basic structure की बात आती है और उसमें कोई अगर बदलाव करने की बात आती है या कोई amendment या कोई नया law अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने की बात कर रहा हो तो उस पर्टिकुलर लॉ को नल एंड वॉइड माना जाता है. यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर और यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रिमेंबर दिस. तो करंट स्टेटस क्या है टुडे? फंडामेंटल राइट्स enjoy supremacy over DPSPs, yet DPSPs can be implemented और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस ला सकती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग DPSPs, बट कंडीशन सिर्फ एक है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे. सो द कोरिलेशन इज दैट ऑफ हार्मनी. ठीक है. एंड यू कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स to implement DPSPs without damaging or destroying the basic structure of the constitution. So this is what you need to remember. ठीक है, ये बहुत important point है. So I'll leave you with a test yourself series जिसमें 2 सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ. When and which committee suggested the justiciable and non-justiciable types of rights? Sapru Committee, Balwant Rai Mehta Committee, Bhurelal Committee, or none of the above? What is the answer? Comment down below. And the second important question I'm leaving you with is that of which of the following articles consist of equal pay for equal work for men and women? I so badly want to answer it, but I'll wait for your answers. All right. Thank you so much for watching the video. यहाँ तक देख लिया to do like, share, comment and subscribe, and do not forget to press the bell icon. And इस particular lesson का अगर PDF आपको चाहिए, go and join the Telegram channel and download it from there, right? So the links are in the description box. I'll see you in the next one. Take care of yourself. Bye.